Hello friends, welcome to my channel. This is Chitralekha and today we are going to start Geography Class 8 first chapter Resources. So let's start the chapter. Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Look at all these things: clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. That is why they are important, said Amma. These are resources. What is a resource? Was Raju's question to Amma. Anything that can be used to satisfy a need is a resource, replied Amma. Look around you and observe. You will be able to identify many types of resources. The water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources. Your father has prepared a tasty snack for you. The fresh vegetable he has used are also resources. So what is resources? Resources is something जिसको कि आप यूज करते हो जब आपको उसकी जरूरत हो. So we can say resources is something that we can use whenever we have to need for them, and they fulfill our desire or requirement. So that is the resources. Water, electricity, rickshaw, vegetable, and textbook have something in common. They have all been used by you, so they have utility. Utility or usability is what makes an object uh, an object or substance a resources. कोई चीज़ resources कब कहलाती है? जब कोई चीज़ resources तब कहलाती है जब कि उसकी कोई यूटिलिटी हो या उसका कोई यूज हो. Whenever we use something, then only that things called a resources. How does something become a resource? Raju now wanted to know. Amma told the children that things become resources only when they have value. Its use or utility gives it a value. All resources have some value, said Amma. Then कोई चीज़ रिसोर्स कब कहलाती है? जब उसकी कोई कुछ ना कुछ वैल्यू हो, कुछ ना कुछ उसकी कीमत हो. ओके, कुछ ना कुछ उसका इम्पोर्टेंस हो, तभी कोई चीज़ कहलाती है resources. Value means worth. Some resources have economic value, some do not. For example, metal may have an economic value, a beautiful landscape may not. But both are important and satisfy human needs. Sometimes कुछ चीज़ों की इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है. इकोनॉमिक वैल्यू मीन्स आपको कुछ पे करना पड़ता है. यू हैव टू पे समथिंग टू बाय दीज थिंग्स. बट कुछ चीज़ों की आपको वैल्यू पे नहीं करनी पड़ती. जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो बहुत अच्छा सिनेरियो है, बहुत अच्छा सीन है, आप उसको देखकर खुश हो रहे हैं, बट आपको उसके लिए कुछ पे नहीं करना पड़ा. तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कुछ वैल्यू नहीं है. इट हैज ऑल्सो हैव वैल्यू. सो कुछ चीज़ों की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, बट कुछ चीज़ों की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती. Some resources can become economically valuable with time. Your grandmother's home remedies have no commercial value today, but if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable. कुछ चीज़ों की, कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू टाइम के साथ में हो जाती है या बढ़ जाती है. जैसे कि सपोज आपके ग्रैंड मदर की कुछ होम रेमेडीज है जिनकी अभी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है. अगर वो उस होम रेमेडीज को पेटेंट करवा लेती हैं, पेटेंट करवाने का मतलब होता है कि वो चीज़ अब उनकी हो गई, उनकी रेसिपी हो गई. अगर किसी और को वो चीज़ मार्केट में लानी है या सेल करनी है तो उनको उनसे परमिशन लेनी होगी. तो दैट इज कॉल्ड पेटेंटेड. इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन, क्योंकि वो आइडिया उनका है, उन्होंने वो चीज़ इन्वेंट की है, इसलिए वो चीज़ अब उस चीज़ पर उनका अधिकार हो गया. तो उसको कहते हैं पेटेंटेड. तो अगर वो चीज़ अब अगर वो पेटेंट करवाने के बाद अगर वो चीज़ वो मार्केट में सेल करती है तो उसकी काफ़ी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होगी. Okay, next, time and technology are two important factors that can change substance into resource. Both are related to the needs of the people.
People themselves are the most important resource. It is their ideas, knowledge, inventions, and discoveries that led to the creation of more resources. Each discovery or invention lead to the many others. The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. Technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resources. टेक्नोलॉजी क्या होती है? टेक्नोलॉजी इट इज अ एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स. टेक्नोलॉजी मीन्स एक तरह का स्किल्स है जो चीज़ों को और बेटर बनाने में यूज में आता है टेक्नोलॉजी. तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करने के लिए. एंड ह्यूमन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, क्योंकि जो आइडियाज हैं, नॉलेज है, इन्वेंशंस हैं, वो सारे किसके द्वारा किए जाते हैं? ह्यूमंस के अंदर. जैसे कि सपोज पानी है, पानी को आप किस तरह से यूज करके उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती हैं, ये आइडियाज ह्यूमंस के माइंड में ही आया. तो इस तरह से ह्यूमन अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसोर्सेज है. रॉक्स हैं, तो रॉक्स से आप मिनरल किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, ये आइडियाज किसके माइंड में आया? ह्यूमंस के माइंड में. तो इस तरह से ह्यूमन अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसोर्सेज है. द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग. फायर की डिस्कवरी भी किसके द्वारा की गई? ह्यूमंस के द्वारा, जिससे कि आप फूड कुक कर सकते हैं और भी कई सारे यूज कर सकते हैं फायर को यूज करके. तो इस तरह से वी कैन से ह्यूमन इज द most important resources themselves only. Now we are discussing type of resources. So resources are generally classified into natural, human made and human. Okay, so if question paper में अगर questions आता है कि how many types of resources, so you can write resources are generally classified into natural, human made and human. Now we are talking about natural resources. Resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. The air we breathe, the water in our rivers and lakes, the soil, minerals are all natural resources. Many of these resources are free gift of nature and can be used directly. In some cases, tool and technology may be needed to use a natural resources in the best possible way. तो natural resources क्या होते हैं? ऐसे resources जिनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बिना किसी मॉडिफिकेशन के, या थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करने के बाद आप उनको यूज कर सकते हैं. तो उसको कहेंगे आप नेचुरल रिसोर्सेज. जैसे वाटर है, सनलाइट है, एयर है, ये क्या हो गए आपके नेचुरल रिसोर्सेज. वैसे मिनरल्स हैं, मिनरल्स भी नेचुरल रिसोर्स हैं, बट आपको इनमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, उसके बाद आप इनको यूज कर सकते हैं. तो ये भी नेचुरल रिसोर्स हैं, बट आफ्टर सम मॉडिफिकेशन you can use them. So these are the natural resources. Plants are also called natural resources. Okay. Next, natural resources are classified into different groups depending upon their level of development and use, origin, stock and distribution. जो natural resources हैं उनको भी classify किया गया है level of development and use, वहाँ पर कितना develop हो रहे हैं वो चीज़ें, कितना यूज हो रही हैं. origin माने कितना आपको उस जगह से मिल रही हैं, कितनी मात्रा में उसकी स्टॉक्स हैं और किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन है. इस तरह से आप इनको नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हैं. लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, origin, stock and distribution. On the basis of their development and use, resources can be classified into two groups: actual resources and potential resources. Development and use के basis पे you can classify in two groups: actual resources and potential resources. Actual resources are those resources whose quantity is known. These resources are being used in the present. The rich deposits of coal in rural region of Germany and petroleum in the West Asia,
The dark soil of the Deccan Plateau in Maharashtra are all actual resources. Actual resources means जिनके बारे में आपको पता है और जो प्रेजेंट में आप यूज कर रहे हैं. You are known about how many quantities are there and you are using these resources in present time. So these are called actual resources. इनके बारे में आपको पता है और आप इनको प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं. तो जैसे कि द रिच डिपोजिट कोल इन रो रीजन ऑफ जर्मनी, पेट्रोलियम वेस्ट एशिया में, डार्क सोइल है आपका डेक्कन प्लेटू इन महाराष्ट्र. These are called the actual resources. Now we are talk about potential resources. So what are the potential resources? Potential resources are those whose entire quantity may not be known and these are not being used at present. These resources could be used in future. The level of technology we have at present may not be advanced enough to easily utilize these resources. The uranium found in Ladakh is an example of potential resource that could be used in future. High-speed wind were a potential resource 200 years ago. Today there are an actual resources and wind farms generated energy using windmills. Like in Netherlands, you will find some in Nagarkoil in Tamil Nadu and on the Gujarat coast. So potential resources वो resources कहलाते हैं जिनके बारे में जिनकी क्वांटिटी के बारे में हमें पता नहीं है और जिनको हम अभी यूज नहीं कर सकते. मे बी आफ्टर सम इयर्स के बाद हम उनको यूज कर पाए, कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए उसके बाद हम उसको यूज कर पाए. तो इस तरह की जो रिसोर्सेस हैं उनको हम कहेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज. जैसे यूरेनियम, लद्दाख, यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख. लद्दाख में जो यूरेनियम है उसको हम अभी यूज नहीं कर पा रहे हैं बट आफ्टर सम इयर्स हम उसको यूज कर पाए. हाई स्पीड ऑफ विंड वर ए पोटेंशियल रिसोर्सेज 200 ईयर्स एगो. अगर 200 साल पहले की बात की जाए तो जो विंड मिल है वो एक पोटेंशियल रिसोर्सेज था जब हम उसको यूज नहीं कर पा रहे थे. बट नाउ हम उसको एज ए एक्चुअल रिसोर्स हम उसको यूज कर पा रहे हैं. विंड मिल्स के द्वारा हम एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. तो ये आज क्या बन गई है, एक्चुअल रिसोर्सेज. अगर पहले ये एक पोटेंशियल रिसोर्स था बट नाउ नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए आइडियाज के द्वारा हम इससे एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. तो इट मीन्स ये आज बन गई है अपने लिए एक्चुअल रिसोर्सेज. ओके, बेस्ड ऑन देयर origin resources can be abiotic or biotic. Abiotic resources are non-living while biotic resources are living. Soil, rocks and minerals are abiotic but plants and minerals are abiotic resources. Based on origin की basis पे we can classify the resources into abiotic and biotic. Abiotic means जो नॉन लिविंग है, नेचुरल है बट नॉन लिविंग है. एंड बायोटिक मीन्स जो कि लिविंग थिंग्स है. लिविंग थिंग्स के अंदर बायोटिक आएगा और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं बट नेचुरल है वो आएंगी अबायोटिक के अंदर. जैसे कि सोइल है, रॉक्स है, एयर है, वाटर है, दीज आर ऑल्सो अबायोटिक. ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं and all creatures and these are called biotic. Natural resources can be broadly categorized into renewable and non-renewable resources. Uh, Renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. Some of these are unlimited and are not affected by human activities, such as solar and wind energy. Yet, careless use of certain renewable resources like water, soil, and forest can affect their stock. Water seems to be an unlimited renewable resource, but a shortage and drying up of natural water resources is a major problem in many parts of the world today. रिन्यूएबल रिसोर्सेज माने जिनको आप दोबारा यूज कर सकते हैं. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज माने जिनको आप एक बार यूज करने के बाद में आप उनको दोबारा यूज नहीं कर सकते. दैट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जैसे वाटर, सोइल,
एयर, ये सब क्या है आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, जिनके स्टॉक लिमिटेड हैं। Once the stock are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. Since this period is much more than human lifespan, such resources are considered non-renewable. Coal, petroleum, and natural gas are some examples. पेट्रोलियम है आपका, नेचुरल गैस है, कोल है, ये बहुत थाउजेंड्स ईयर्स की प्रोसेसिंग के बाद बने हुए हैं। तो इनको अगर आप एक बार खत्म होने के बाद में इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इनको फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाती हैं। On the basis of their distribution, resources can be ubiquitous or localized. Resources that are found everywhere, like the air we breathe, are ubiquitous. But those which are found only in certain area, certain place, are localized, like copper and iron. Localized means जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, जैसे कि आपका हीरा है, हीरा एमपी में पन्ना में पाया जाता है, तो एक लोकलाइज्ड हो गया, हर जगह नहीं है। गोल्ड है आपका, वो अफ्रीका में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। डायमंड भी आपका सबसे ज़्यादा अफ्रीका में पाया जाता है, हर जगह नहीं है, तो वो एक लोकलाइज्ड है। वो एक ऐसा रिसोर्स है जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही आपको अवेलेबल होगा, हर जगह सेम क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, या फिर कहीं है ही नहीं वो अवेलेबल। तो इस तरह के रिसोर्सेज को आप कहेंगे लोकलाइज्ड। एंड यूबिक्यूटस कहलाता है ऐसे रिसोर्सेज जो हर जगह इक्वल क्वांटिटीज में या इक्वल अमाउंट्स में अवेलेबल है। तो ओके, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, climate and altitude. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का वो किस पर डिपेंड करता है? टेरेन मीन्स आपका लैंड एरिया कैसा है, माउंटेन्स है, फॉरेस्ट है, प्लेन एरिया है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। एल्टीट्यूड मीन्स बहुत ज़्यादा हाइट है या कम हाइट है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का वो इन फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ कुछ अलग टाइप के मिनरल्स होंगे, कुछ अलग टाइप की चीज़ें होंगी। जहाँ कम बारिश होती है वहाँ पर कुछ अलग टाइप की चीज़ें होंगी। तो ये सब जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का वो कहाँ किस किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। ओके, क्योंकि अर्थ पर हर जगह एक सा सारी चीज़ें नहीं है, कहीं बहुत फॉरेस्ट एरिया है, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर बहुत शॉर्ट रेनफॉल है, एंड समवेयर सो हैवी रेनफॉल होता है। तो दीज ऑल आर फैक्टर्स डिपेंड, दीज ऑल ये सब चीज़ें हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज इन पर डिपेंड करती हैं। ओके, तो नेक्स्ट आज हम इस सेशन को यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि बहुत लंबा सेशन होने से समझ में नहीं आएगा। सो थैंक यू ऑल फॉर माय watching my video. Okay, so we will meet in next class. Till then, thank you all.